So let's start with today's news highlights. Ladakh gets new policies on quota, domicile status. Non Ladakhis must stay in the Union Territory for 15 years to be considered domiciles. 80% of the government jobs to be reserved for STs. A third of Hill Council seats to be reserved for women. जो लद्दाख सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के लिए सेंटर में गुहार लगाई थी फॉर द रीजन. द न्यू पॉलिसीज ऑन रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेजेस डोमिसाइल्स एंड कॉम्पोजिशन ऑफ हिल काउंसिल्स फॉर लद्दाख which became a union territory in 2019. अब नोटिफिकेशंस जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इशू किए हैं वाया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन एक्ट वो क्या क्या है. वो ये है कि 85% रिजर्वेशन फॉर रेजिडेंट लद्दाखीज इन द गवर्नमेंट जॉब्स रहेगा. फॉर अदर रेजिडेंट इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू बी कंसिडर्ड डोमिसाइल्स they will have to show 15 years of continuous residence from October 31, 2019 लद्दाख फाउंडेशन डे. यानी कि अक्टूबर 31, 2019 से लद्दाख जो कि लद्दाख फाउंडेशन डे भी है, ये आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि अक्टूबर 31 जो है वो लद्दाख फाउंडेशन डे है 2019 में. तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको 15 इयर्स का जो कंटिन्यूस रेसिडेंस है वो दिखाना पड़ेगा. इन अ फर्स्ट a third of the seats in the hill councils have been reserved for women in on a rational basis. Official languages of the UT कौन सी considered रहेंगी? English, हिंदी, उर्दू, भोती एंड पुर्गी. नाउ जैसा कि मैंने बताया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने नोटिफाई किया था ये लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2024. ये एक्ट जो है कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 को अमेंड करता है. द न्यू प्रोविजन सब्स्टिट्यूटिंग अ सेक्शन इन 2004 एक्ट विच केप्ड द रिजर्वेशन ऑफ at 50% said the total percentage of the reservation shall in no case exceed 85% excluding the reservation for economical weaker section. यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हैं उनको एक्सक्लूड करके 85% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं करना चाहिए. टोटल रिजर्वेशन कितना है? 95% का है इन द यूटी जो कि हाईएस्ट है कंट्री में. उसके बाद मेघालय का है 85% रिजर्वेशन है फॉर शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स. एंड अरुणाचल प्रदेश का थर्ड नंबर पे है दैट हैज़ एन 80% कोटा फॉर STs. नेक्स्ट ये थोड़ा यूपी के पर्सपेक्टिव से अगर आप PCS का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि 20% वैकेंसीज इन यूपी पुलिस टू बी रिजर्व फॉर अग्निवीर्स. The Uttar Pradesh Cabinet on Tuesday approved a proposal to provide 20% reservation to Agniveers for direct recruitment in the state police force. The policy will come into force from August 2026. After the first batch of Agniveers has completed the 4-year tenure in the आर्म्ड फोर्सेस. ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर मीनिंगफुल पोस्ट सर्विस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम एज सेड बाय द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना. नेक्स्ट वील मूव ऑन टू. अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो MSc इरिना है ये जो कंटेनर वेसल है ये लार्जेस्ट बिगेस्ट कंटेनर वेसल है इन द वर्ल्ड है. दैट इज़ ऑपरेटेड बाय स्विस बेस्ड कंटेनर शिपिंग एजेंट. ये बेसिकली जो लोअर लेवल्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है या इवनली UPSC भी इसको ट्विस्ट करके पूछ सकता है
कि ये कंटेनर वेसल है, MSC एरेना कंटेनर वेसल है, इसको हैंडल कौन करता है. सो ये इट इज़ बीन ऑपरेटेड, इसको ऑपरेट कौन करता है. इट इज़ बीन ऑपरेटेड बाय स्विस बेस्ड कंटेनर शिपिंग जाइंट मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, ये इसका फुल फॉर्म है MSC का. ठीक है. रीच द आउटर एंकोरेज ऑफ विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट ऑन ट्यूसडे. सो इतना ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ. नेक्स्ट ये रिसर्च कैरी की गई थी, आर्टिफिशियल मेटल बेस्ड नैनोजाइम दैट प्रिवेंट्स एक्सेस ब्लड क्लॉटिंग. Researchers at Indian Institute of Science have developed an artificial metal-based nanozyme that can potentially be used to clamp down abnormal blood clotting caused by conditions like pulmonary thromboembolism (PTE. ये कंडीशन है. और ये जो एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, इसमें होता क्या है कि जितने ब्लड क्लॉट्स बनने चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ को हील करने के लिए जितने ब्लड क्लॉट्स बनने चाहिए उससे ज़्यादा एक्सेस हो जाता है और वो फिर एक फेटल कंडीशन हो जाती है. ठीक है. तो ये जो कंडीशन होती है PTE की, सेम कंडीशन कोविड-19 की वजह से भी हुई है. सो इस पे रिसर्च कैरी की गई थी IISc द्वारा. According to IISc, under the normal circumstances when a blood vessel is injured, specialized blood cells called platelets get activated and clustered together around the vessel to form protective blood clots, जो कि ये नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की. इस प्रोसेस को ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड हेमोस्टेसिस कहते हैं. Complex series of protein interactions triggered by signals from physiological agonist chemicals such as collagen and thrombin. इनका ये जो प्रोटीन this involves a complex series of protein interactions which are being triggered by signals from physiological agonist. ये physiological agonist एक टाइप का केमिकल होता है such as collagen and thrombin, और ये आपकी बॉडी के अंदर ही पाया जाता है. However, when these signals go haywire in conditions like PTE or diseases like COVID-19, as I told you, oxidative stress and levels of toxic reactive oxygen species ROS increase, leading to overactivation of the platelets. This triggers the formation of excess blood clots in the blood vessels, contributing to thrombosis, a major cause of morbidity or mortality. एक्सेस ब्लड क्लॉट्स होगा तो प्रॉब्लम होगी ब्लड फ्लो में और उसकी वजह से डेथ हो जाएगी. So to tackle this challenge, they have developed a materials that mimic the activity of natural antioxidant enzymes which scavenge reactive oxidative molecules. These nanoenzymes work by controlling ROS levels, thereby preventing the overactivation of the platelets that leads to excess clot formation or thrombosis. So thrombosis किन conditions में होता है ये आपको ध्यान देना चाहिए कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में होता है, ROS में होता है, कोविड-19 लाइक सिचुएशंस में होता है, PTE में होता है. ये ऑप्शंस UPSC दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस डज द थ्रोम्बोसिस टेक्स प्लेस या द फॉर्मेशन ऑफ एक्सेस ब्लड क्लॉट्स टेक्स प्लेस. ठीक है. सो ये ध्यान देने वाली बात है. अब इसकी जो एफिकेसी है ना, ये जो नैनोजाइम है, इसकी एफिकेसी को इस्केमिक स्ट्रोक पे भी एक्सप्लोर करने का प्लान हो रहा है. और ये इस्केमिक स्ट्रोक जो है ये भी क्लॉगिंग ऑफ ब्लड वेसल्स से ही होता है.
Sulfur cleaning device in coal plants not necessary. 92% of India's 600 coal plants units are yet to install FGDs. Panel recommends exemption of 80% which are not near major pollution centers. Panel says it will not adversely impact public health. The high powered committee of experts chaired by Principal Scientific Advisor Ajay Sood has recommended that India to do away with a decade long policy of mandating equipment called flue gas desulfurization FGDs units in all coal fired thermal power plants TPP according to the documentations pursued by the Hindu. अब ये फंक्शन कैसे करते हैं. ये एफ जी डी यूनिट्स जो हैं दे आर रिक्वायर्ड टू बी retrofitted in TPPs to cut harmful sulfur dioxide emissions. While 92% of India's 600 TPPs have not yet been installed, the recommendation would exempt about 80% of them from needing to install such equipment. The limited number of vendors capable of installing such equipments in India, the high installation cost, the potential rise in electricity bills and disruptions due to COVID-19 pandemic have been some of the reasons historically cited by the Power Ministry, the overseer of India's TPPs, for plants inability to adhere the previous deadlines. ये रीजंस थे जिनकी वजह से आपके एफ जी डीज़ जो हैं वो इंस्टॉल नहीं हो पाए थे. This was the first time that the multiple arms of the governments congregated to deliberate on whether FGDs were required in the first place or not. Their verdict draws on three reports by the CSIR, NIRI, the National Institute of Advanced Studies, and the Indian Institute of Technology, Delhi. The guiding principles informing the committee's recommendations are that guiding principles क्या हैं that SO2 levels in the ambient air across the country are around 10 to 20 micrograms. ये statement based questions में आ सकता है UPSC में और cubic meter. This is well below the India's air quality norms of 80. Indian coal is low in sulfur. Sulfur dioxide levels in cities near plants with operational FGD units do not differ significantly from those without these units, and all of these were anyway well below the permissible levels. So ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कमेटी ने जो रिकमेंड किया है ये यही था. The government plans to wind national polio surveillance network centers in India. Government has proposed to wind down in phases WHO established National Polio Surveillance Network, currently a countrywide network of 200 units. Experts in the field have commented that the move would be premature and would be ill-advised that at this stage, with India's neighboring countries still harboring cases of polio. Staff at NPSN centers have received communications from WHO representative in India, advising them of an upcoming transition initiated by the government. The transition involves gradual drawdown of the NPSN units in each year from approximately 280 units in 2024 to 25. सो आप NPSN का जो फंक्शन है वो आप देख लीजिएगा किसके अंडर में ये वर्क करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं,
यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है। और जो विड्रॉवल हो रहा है, गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएट किया है विड्रॉवल, ये प्लान किया जा रहा है कि सेंटर्स जो हैं अप्रॉक्सीमेटली जो 280 यूनिट्स हैं इनको विड्रॉ किया जाएगा 2024 से। सो इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी क्या इश्यूज़ इंडिया फेस कर सकता है, इसका हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। सो ये इसको आपको थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाने पड़ेंगे। So next we come on to bacteria found at Rajgir hot spring lake shows antimicrobial activity. Well, the scientists have determined that hot springs around the world are unexplored reservoirs of antibiotic producing bacteria. The hot springs of India are not well studied. Driven by their putative value, researchers at Vellore Institute of Technology in Tamil Nadu recently examined the Rajgir hot spring lake in Nalanda district. The cozy life on the earth, a temperature of around 25 to 30 degrees Celsius, is ideal, but during a heat wave where the temperatures can cross 40 degrees, the consequences can be deadly. Humans and most complex multicellular organisms are not built to tolerate such heat. This doesn't mean that no living thing can, however, bacteria called thermophiles, meaning heat lovers, has been known to tolerate 45 to 70 degrees Celsius of the heat. Such a high temperature can give human skin third degree burns. Thermophilic bacteria are seen as an opportunity. Places on Earth with temperatures like this, including hot springs, deep sea thermal vents, and compost piles, offer a mineral rich neighborhood with relatively few competing life forms. To gain an edge, some thermophilic bacteria produce potent antibiotics as weapons to neutralize their competitors. This is exactly why scientists have deemed hot springs around the world to be unexplored mines of antibiotic producing bacteria. For example, thermophiles isolated from hot springs in Asir and Jizan regions of Saudi Arabia have been found to produce a variety of potent antibiotics effective against the gram positive pathogenic bacteria. The hot springs of India are not well studied, however. Exploring the microbial diversity, people take holy baths in these hot spring lakes, thinking disease can be relieved. Professor at KV Bhaskarrao, who is a professor at VIT, he said this. Corresponding author of the study paper, as a macrobiologist, I know that along with the elements that are present in water, some of the microorganisms can also be responsible for this so-called curative activity. After collecting the samples, the researchers identified the microorganisms present in them, for which they are 16 sRNA metagenomics. This technique relies on identifying the 16 sRNA which is found in all microbes but has slight variations across the species, thus helping the scientists to identify bacteria accurately. So 16S small r RNA मेटाजेनोमिक्स जो टेक्निक है उसका यूज़ हुआ है. Researchers found many species of bacteria, but one group that particularly caught their attention was Actinobacteria, which made up 40 to 43% microbial biodiversity at the lake. Bacteria belonging to this group
is known are known producers of antimicrobial compounds. Well-known drugs like streptomycin and tetracycline were first discovered as a product of actinobacteria. So this is what the importance these microbes they hold. अब इन्होंने उसके बाद क्या किया कि इन्होंने कल्चर किया प्रोस्पेक्टिव बैक्टीरिया को with different pathogenic strains, Escherichia coli, Salmonella, Klebsiella, Pseudomonas, ये जो जितने भी बैक्टीरिया हैं, Streptococcus aureus, if the test could inhibit the growth of the pathogenic bacteria on a culture, it was confirmation that antimicrobial compound was being produced. The team was able to identify 7 strains of actinobacteria that produced potent antimicrobials against the several pathogens. इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल पोटेंशियल क्या है इसका, ये इम्पॉर्टेंट है. द पोटेंशियल ऑफ थर्मोफाइल्स goes beyond antibiotics. They have many applications across the industries. For example, the PCR test widely used during the COVID-19 pandemic to check the virus presence requires an enzyme that was first found in thermophile called Thermus aquaticus. ये important है. कौन सा enzyme found हुआ था? तो this is Thermus aquaticus. A 2018 study in Frontiers in Microbiology by Banaras Hindu University researchers reported that the cocktail of bacteria from hot spring in Kumatang area of Leh district, the ability to promote plant growth. Associate professor and studies lead author Jay Prakash said that hot spring strains are effective for industrial and agricultural applications. Next we come to why do volcanoes erupt? Deep beneath the Earth's surface, temperature and pressure are high enough to melt the parts of the mantle and crust to form molten rock called magma. Because magma is less dense than solid rock, it tends to rise and cool in subterranean reservoirs. When magma ascends, the water vapor, carbon dioxide, sulfur dioxide, and other volatile compounds are dissolved in it, stay trapped by the weight of the overlying rocks. But close to the surface, the pressure drops and allows these compounds to exit in the form of bubbles. Like when soda bottle starts to fizz when the cap is open. अब bubbles जब rise होते हैं तो internal pressure भी increase होता है. At the tectonic plate boundaries, above the mantle, plumes, fractures and faults in the crust allow the pressure to be released. So जो भी fractures हैं, faults हैं, वो allow करते हैं जो भी pressure है, और जब वो pressure release होता है तो in the form of magma brimming with the expanding gases surges through this weak zone. यानी जो भी weak zone रहता है, जो भी cracks रहते हैं, faults रहते हैं, उनके थ्रू ही magma बाहर आता है. So आप इस पर थोड़ा सा notes भी बना लीजिएगा, because volcano can be the prelims based topic. इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज क्या होते हैं, उनमें जो भी आपके फॉल्ट्स रहते हैं वो कौन से हैं, जो भी लैंडस्केप्स होते हैं वो कौन से लैंडस्केप्स होते हैं, लाइक सिल्स, डाइक्स. ठीक है.
ये जो भी फॉर्म ऑफ लैंडस्केप्स होते हैं, ये आपको थोड़ा सा इस पर नोट्स बनाने पड़ेंगे।